Hi everyone, I am Arpita Sharma. Welcome back to Arpita Sharma classes. We are starting from today the Halla Bol series on Indian economy. हम आज से start कर रहे हैं हल्ला बोल series Indian economy के ऊपर, जिसके अंदर हम Indian economy के सारे basic topics जो कि आपके prelims के लिए important है, उन्हें हम cover करेंगे. चाहे NCERT हो, चाहे रमेश सिंह सर की book हो, हम हर source से सारे basic concepts और important topics को cover करेंगे, which can be asked in your preliminary examination. We are going to cover all those topics from NCERT's Ramesh Singh sir books, Sanjeev Verma sir books, etc. Right? From different important sources, we are going to cover them, and also we are going to use government websites, right, in order to make the topics much more clear and much more easier. बहुत ज़्यादा clear करने के लिए topics को उनको easy बनाने के लिए हम अलग-अलग sources का use करेंगे, चाहे वो government websites ही क्यों ना हो. ठीक है, तो आज से हम start करते हैं अपनी हल्ला बोल series Indian economy की. I hope you will enjoy this series. उम्मीद करती हूँ आप इस सीरीज को पसंद करेंगे. देखिए, अगर आपका कोई भी कमेंट है सीरीज को कैसे हमें इंप्रूव करना है या और सीरीज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताए बिना मत रहिएगा, हेजिटेट मत कीजिएगा. इफ यू हैव एनी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रिगार्डिंग दिस सीरीज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वी आर गोइंग टू ऐड योर सजेशंस इन दी अपकमिंग क्लासेस एज वेल. ओके, आज की क्लास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वी हैव डिवाइडेड टुडेज क्लास इन टू पार्ट्स, राइट. दिस विल बी द इंडेक्स. आई शो यू द इंडेक्स ऑल्सो. मैं आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ. We are going to cover the first 5 chapters today: domestic territory, economic territory, normal residence, factor income and transfer income, final and intermediate goods, consumption and capital goods. These are the 5 chapters that we are going to cover today. In the next class, we are going to cover these 6, 7, 8 chapter. Okay, ऐसे ही हम सारे important topics को आज cover करने वाले हैं. You can also make the index with me in the class. आप क्लास में ना मेरे साथ साथ index बनाते चले जाओ, ठीक है? So in order to gauge what you have studied and what you have completed so far. And also the class PDF will be uploaded on our Telegram channel. क्लास का PDF Telegram channel पे अपलोड होगा, बट अभी नहीं. जब कम से कम 2-3 क्लासेस हो जाएंगी ना, उसके बाद हम क्लास PDF अपलोड करेंगे. So it will be better if you take notes simultaneously with this lecture, because class PDF will be uploaded after 2-3 lectures are done. ओके, पॉइंट क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं आज की क्लास. ओके, क्लास से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट. आई हैव अ वेरी स्मॉल अनाउंसमेंट. इट विल टेक 1 or 2 minutes. You all are well aware of the Unacademy Civil Services Championship, which is India's largest scholarship test curated by top educators for preliminary 2021 examination. Now this test is going to take place on 13th June 10 AM to 12 PM. 13 जून को ये टेस्ट होने वाला है. Now why it is important? Because if you score top 50 rank in this test, then you are going to get direct guidance by those who have themselves cleared the examination. Abhishek Sarav sir, Durga Shakti Nagpal ma'am, Krishna Mohan sir, all these people who have themselves cleared the exam are going to directly mentor you in this journey. And also you stand a chance to win scholarships and prizes worth rupees 3 crore. MacBook, iPhone, iPad, AirPods, सब आप जीतने का आपके पास चांस है अगर आप टॉप 50 में रैंक लेकर आते हो. तो enroll now, it is free of cost. मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में below the video. Attempt the live test on 13th June. Okay, all right. चलो क्लास शुरू करते हैं. So we are going to start with, see, all these topics that I'm going to teach you today, na, these are basic foundational concepts. When you understand this, only then you will understand the other important concepts when it comes to इकोनॉमी, राइट. जैसे कि नेशनल इनकम होता है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टडिंग द बजट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, राइट, एंड ऑल्सो फॉर मेंस. यू कैन अंडरस्टैंड द बजट एंड द कॉन्सेप्ट्स देयर इन व्हेन यू अंडरस्टैंड द बेसिक टॉपिक्स, बेसिक डेफिनेशंस. सो वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट. आवर टॉपिक इज डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी. ओके, सो हियर यू विल सी डोमेस्टिक टेरिटरी. व्हाट इज इट? डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट इकोनॉमिक टेरिटरी. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट in national income accounting. That is why we are understanding it in detail. National income accounting में ना domestic territory काफी important concept है. And as a civil servant you should know about it. Okay, so in a very common language, domestic territory is the political frontiers of a country. एक country का political frontier, ठीक है, political boundary, that is domestic territory. Political boundary बोल रही हूँ मैं, physical boundary नहीं बोल रही हूँ. I'm not saying physical boundary, political boundary. It will become much more clearer. अभी I will let you know. However, for the purpose of national income accounting, it is used in a very wider sense. So what is the political frontier, or in addition to political frontiers, what other territories are included in the domestic territory? First is, over here you can see the ships, aircrafts owned and operated by normal residents between 2 or more countries.
नॉर्मल रेजिडेंट्स, इट कैन बी इंडिविजुअल ऑल्सो, इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। नॉर्मल रेजिडेंट जो भारत का है, जिसका इकोनॉमिक सेंटर जो भारत है, ठीक है, अगर वो कोई शिप या एयरक्राफ्ट ओन करते हैं और उसको 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज दैट एरिया वेयर द एयरक्राफ्ट इज ऑपरेटिंग विल ऑल्सो बी काउंटेड एज द पॉलिटिकल फ्रंटियर और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। Okay, point clear? For example, the planes operated by Air India between Russia and Japan, they are part of domestic territory of India. Okay, planes operated by Singapore Airways between India and Japan, they are part of domestic territory of Singapore. सिंगापुर की एयरलाइंस है, इंडिया और जापान के बीच में ऑपरेट कर रही हैं, तो वो एरिया सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। मान लीजिए इंडिया का एयर इंडिया है जो कि रशिया और जापान के बीच में उड़ रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो रशिया और जापान के बीच का एरिया जहाँ अपना प्लेन है ना, वो किसका पार्ट हो जाएगा? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? अब सेकेंड इज fishing vessels over here. Fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms operated by residents of a country in international waters where they have exclusive rights of operation. For example, मैं example देती हूँ, there are fishing boats operated by Indian fishermen in international waters of Indian Ocean. That will be considered part of domestic territory. अपने fishing boat जो Indian fishermen चला रहे हैं ना Indian Ocean के किसी एरिया में, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स में, तो वो एरिया अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स आर वेरी ऑर्डिनरी, द रेजिडेंट्स हु आर ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन अ कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। एक कंट्री में आप रह रहे हो, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस कंट्री में, वहीं कमाते हो, वहीं अर्न करते हो, वो आप वहां के नॉर्मल रेजिडेंट हो जाओगे। ठीक है, नाउ थर्ड domestic territory will be embassies, consulates, military establishment of a country located abroad. For example, Indian embassy in Russia is a part of domestic territory of India. रशिया का जो इंडियन एम्बेसी होगी ना, वो डोमेस्टिक इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ऑल राइट, तो ऐसे ही अगर इफ रशियाज एम्बेसी इज इन इंडिया, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ रशियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। रशिया की एम्बेसी भारत में है ना अगर, तो वो रशिया की टेरिटरी का पार्ट होगी। भारत की एम्बेसी अगर रशिया में है, कॉन्सुलेट ऑफिस रशिया में है, तो वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। एंड द इनकम विच कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्ट बनता है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो इनकम आती है वो डोमेस्टिक इनकम हो जाती है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ let us move towards the difference between citizenship and residentship. Citizenship और residentship के बीच में difference क्या होता है? Very important concept. Before that, we should understand who are normal residents. Normal residents of a country refer to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest is also in that country. So it can be individual also, it can be institution also. Now, center of economic interest, what do you mean by that? ये क्या होता है? ये center of economic interest क्या है word? See, it means two things. इसका मतलब दो चीज होती है। Resident lives or is located within domestic territory, या तो वो domestic territory में रह रहा है या domestic territory के अंदर located है कहीं। Second, resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location. Domestic territory में रहकर वहीं अपनी खर्चा कर रहा है, वहीं कमाई कर रहा है और वहीं एक्यूमुलेट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो उसका इकोनॉमिक सेंटर हो गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, दे आर नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स। Employees of international organizations, they are not considered a part of normal resident. मान लीजिए एक अमेरिकन है जो यूएनओ के इंडिया के ऑफिस में काम कर रहा है, इंडिया का जो ब्रांच है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। ठीक है, वो तो अमेरिका का रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? Now coming towards the two terms citizenship and residentship. When we talk about citizenship, it's a legal concept. एक तरीके का ये legal concept है जो place of birth पे depend करता है, आपके place of birth पे depend करता है। ठीक है, और it depends on these legal provisions allowing a person to become a citizen. आप किसी legal provision या legal format के through citizen बने हो किसी country के, उस पे depend करता है। That is a legal concept. It means Indian citizenship can arise in two ways. First, when a person is born in India and he automatically acquires citizenship of India, and second, a person born outside India, okay, but and he applies for citizenship as per the Indian law and he is granted the citizenship. Okay, in that case, it becomes a legal concept.
Now the term is residentship. Residentship is not a legal concept, it is an economic concept. ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आप एक कंट्री में किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. सो हियर एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री. एक बंदा ऑर्डिनरीली एक कंट्री में रिसाइड कर रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा समय के लिए, and his center of economic interest lies in that country. 1 साल से ज्यादा उस कंट्री में रह रहा है और कमाई भी कर रहा है उसी कंट्री में, तो वो रेजिडेंट बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया. सिटीजन नहीं माना जाएगा, इज नॉट अ सिटीजन, नॉर्मल रेजिडेंट. He is not a citizen or national of India, but because he has no citizenship, it means a person can be citizen of one country and at the same time resident of another country. So a Chinese person living in India for more than 1 year, earning in India, accumulating in India, will be a citizen of China, but he will be a resident of India. Okay, so this is an economic concept, not a legal concept. Point clear? Chalo, if this point is clear, we should move ahead. Now let us understand the concepts of domestic territory and normal resident. Domestic territory और normal resident समझना बहुत जरूरी है because while calculating national income it becomes very important. ठीक है. So domestic territory helps you to estimate the domestic product. ओके, ये बात तो क्लियर है. एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर लोकेटेड इन इकोनॉमिक टेरिटरी. भले ही उसको रेजिडेंट चला रहे हैं, नॉन रेजिडेंट चला रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इट इज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, इट इज प्रोड्यूसिंग थिंग्स, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट विल गिव यू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. Okay, and the money value of domestic product is called domestic income. Domestic product को बेच के जो सब पैसा आता है वो domestic income का पार्ट बनता है. Now coming towards normal resident, this concept helps to estimate national product. Domestic territory helps you to estimate domestic product. Normal resident concept helps you to estimate national product. The money value of national product is known as national income. नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स. भले ही वो इकोनॉमिक टेरिटरी में हो या बाहर कमा रहे हो, नॉर्मल रेजिडेंट्स जो है ना उनकी इनकम को उनकी प्रोडक्ट एक्टिविटीज से हम नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. Okay, here's a small announcement for all of you. Unacademy has revealed the combo prices now. Now you can stand a chance to save big time on the combo. If you take GS plus optional combo subscription on Unacademy for a period of 1 year or more, then you will be getting total 35% discount. 25% discount if you take GS plus optional combo, 10% discount if you use my code ARPITA10. अगर आप ये कोड यूज करते हो ना ARPITA10, तो आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पर. 25% तब मिलेगा जब आप जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो पैकेज लेते हो. तो टोटल आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा जीएस ऑप्शनल के कॉम्बो पैक पे. राइट, आई हैव गिवन यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो. नाउ इट्स द हाई टाइम टू स्टार्ट योर कोचिंग. अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है ना तो वेट मत करो, ऑफलाइन अभी जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज थर्ड वेव इज ऑल्सो कमिंग. स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक योर कोचिंग एट द कंफर्ट ऑफ योर होम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग. ओके, सो दिस इज द हाई टाइम. टुडे इज द you can say based on today your future is built. आज के बेसिस पे ही तो फ्यूचर बनता है ना. फ्यूचर कोई हाइपोथेटिकल चीज तो है नहीं, आज आपका प्रेजेंट ही फ्यूचर बनाता है. तो प्रेजेंट को मैक्सिमम यूटिलाइज करो. ओके, आई हैव गिवन यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन Unacademy, you can subscribe today. So when we talk about the factor income means income received by factors of production. What is factor of production? प्रोडक्शन में जो जो चीजें लगती हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड जमीन लगती है, फैक्ट्री बनाओगे. ठीक है. लेबर आपको लोगों को लगवाना पड़ेगा काम पर. कैपिटल प्रॉफिट्स, आप इन्वेस्ट करोगे उससे प्रॉफिट कमाओगे. एंटरप्रेन्योर आपको आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ही वो काम होगा. राइट, और एज एन एंटरप्रेन्योर आप प्रॉफिट को भी लोगे, आपका सैलरी मार्जिन भी होगा, आपका इंटरेस्ट भी आप कमाओगे, शेयर्स भी होंगे. राइट, पॉइंट क्लियर हो रहा है. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइमरी इनपुट्स विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स सर्विस बना रहे हो आप इन 4 चीजों के बिना बना ही नहीं सकते.
ठीक है, एक हाथ से अकेले बैठे बैठे थोड़ी काम कर सकते हो, आपको जमीन की जरूरत है, लेबर की जरूरत है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको आपके नेतृत्व की जरूरत है, राइट। So factors of production, income received by factors of production for rendering factor services in the production process is factor income. अब कैसे, अब मैं समझाती हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लैंड से कैसे इनकम हो सकती है, रेंट की इनकम हो सकती है, यू कैन अर्न रेंट, अगर आप लैंड किसी को उधार पे देते हो आप रेंट की इनकम बना सकते हो। लेबर, इफ यू आर प्रोवाइडिंग लेबर यू कैन अर्न वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल से प्रॉफिट आएगा, एंटरप्रेन्योर आपका सैलरी हो सकती है, आपका शेयर हो सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। सो इनकम विच इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, दैट इज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना फाइनल, तो फैक्टर इनकम से आपको नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम जो आती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। फैक्टर इनकम ऑलवेज रिमेंबर इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। Okay, it is received for providing factor services of land, labor, capital and enterprise. Okay, point clear? Now coming towards the transfer income. देखो फैक्टर इनकम तो आप सर्विसेज दे रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। बट इन ट्रांसफर इनकम इट इज द इनकम रिसीव्ड विदाउट गिविंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। ये वो इनकम है कि आपको मिल तो रहा है पैसा बट आपको प्रोडक्टिव सर्विस दे नहीं रहे। इट इज वन साइडेड कॉन्सेप्ट, यूनिलैटरल है, वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम क्योंकि तुम अपनी तरफ से क्या दे रहे हो, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप मिल गई, फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है कंट्रीज में, फॉर एग्जाम्पल पॉकेट मनी मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, तो आपकी तरफ से कोई प्रोडक्टिव सर्विस तो जा नहीं रही है ना, समझ रहे हो। तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम में वो इनकम जाएगी जिससे कोई प्रोडक्शन हो रही है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है लोगों को, फिर अर्निंग हो रही है। पर ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता क्योंकि आप अपनी तरफ से कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दे रहे हो, ये वन साइडेड कॉन्सेप्ट हो रहा है। इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो। स्कॉलरशिप बाहर से भी मिल सकती है आपको, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। सो दैट इज फैक्ट ट्रांसफर इनकम। नाउ द टैक्सेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट आर आल्सो ट्रांसफर इनकम। आपकी गवर्नमेंट जो टैक्स रिसीव करती है ना आपसे, कोई प्रोडक्टिव सर्विस थोड़ी दे रही है, टैक्स आप दे रहे हो ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्डअप हो, राइट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बिल्डअप हो, तो वो ट्रांसफर इनकम का पार्ट है गवर्नमेंट का बिकॉज इट इज दे आर रिसीविंग देम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। सिमिलरली सब्सिडीज विच आर पेड बाय गवर्नमेंट आर ट्रांसफर पेमेंट्स। सब्सिडीज छूट देती है ना गवर्नमेंट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो वो भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। कोई प्रोडक्टिव सर्विस थोड़ी प्रोवाइड कर रहे हो आप उनको, छूट मिल रही है आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस पर, तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट। पॉइंट क्लियर हो गया। आई होप नाउ टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम इज क्लियर। Now coming towards transfer receipt. Transfer receipt दो तरीके की होती है. There are two types of transfer receipts. First is current transfer, second is capital transfer. Current transfer is regular in nature, which is meant for consumption purpose. It is made out of income. For example, unemployment allowance या old age pension आपको regularly मिलेगी ना, ऐसा नहीं है ना 2 साल मिली तीसरे साल नहीं मिल रही. You will get the old age pension regularly. So that is current transfer, that is regular in nature. You are going to receive it annually or monthly or quarterly, but regularly you are going to receive it. It is for consumption purpose. You are consuming it. You are not doing anything else. You are consuming your pension. Capital transfer is irregular in nature. It is made out of wealth of payer. For example, war damage, capital gain tax. आपके wealth से आपको मिलता है ना. For example, you purchase a land. After 5 years you sell it. तो आपको उसके ऊपर जो गेन होगा, प्रॉफिट होगा, उस पर टैक्स लगेगा. ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स क्या हुआ, क्योंकि वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है. दैट इज टेकन आउट ऑफ द वेल्थ ऑफ द पेयर. जो कैपिटल गेन टैक्स भर रहा है उसके प्रॉफिट से ही तो आपने टैक्स निकाला ना. तो दैट इज इरेगुलर इन नेचर. जरूरी नहीं है सेम टैक्स हर साल वो भरेगा. आज उसने जमीन बेची, 10 साल बाद बेचेगा फिर नेक्स्ट जमीन, या फिर जमीन बेचेगा ही नहीं. ठीक है, तो वो इरेगुलर हो गया नेचर में. दैट इज कैपिटल ट्रांसफर. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, वॉर डैमेज इट इज नॉट रेगुलर इन नेचर. वन टाइम ही दिया जाता है ये. Okay, so that these are current transfer and capital transfer. Now let us understand the difference between factor income and transfer income. Factor income is received by factors of production. It is included in both national income and domestic income. It's an earning concept because you earn wage, rent, interest and profit. Transfer income is received without giving any productive service. It is not included in national or domestic income, and it is a receipt concept. For example, old age pension, scholarship, etc. That is transfer income. Okay.
Now coming towards the next concept, that is final good and intermediate goods. Final goods, what are they? Final goods means those goods which are used either for consumption or for further investment. ठीक है, तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? या तो आप कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो या फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव परचेज्ड मशीनरी, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फर्दर. ठीक है, मशीनरी परचेज करते हो तो अपने फर्म में इन्वेस्ट ही तो करोगे ना, इस मशीनरी को रखोगे तो नहीं सजाकर. या फिर आप मान लीजिए मिल्क खरीद रहे हो घर पीने के लिए, तो कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, यू आर परचेजिंग मिल्क फॉर कंज्यूमिंग इट, सो इट इज ऑल्सो फाइनल गुड, right? Or you are purchasing paneer for consuming it, or you are purchasing a furniture for further investment, right? So final good includes goods purchased by consumer households like milk, paneer, dahi, doodh, etc. Goods purchased by firms for capital formation like plant, machinery, etc., equipments, etc. So always remember, final goods are neither resold nor used for any further transformation. Final good में ना further कोई transformation नहीं होता, ना ही इसको further रीसेल किया जाता है. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, या तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा या ये कंजम्पशन के लिए यूज होगा. Now coming towards intermediate goods. Intermediate goods are those goods which are used either for resale or for further production in the same year. Same year word is very important. ये word बहुत important है. उसी साल जिस साल आपने intermediate goods को आगे भेजा, या तो आप उसको फिर से बेचोगे या उसको further production में add करोगे. For example, sugar. ठीक है, जैसे कि आपने शुगर को तैयार किया, उसके बाद शुगर को आगे आप फाइनल गुड बिस्किट बनाने के लिए यूज कर सकते हो. यू कैन यूज शुगर टू मेक बिस्किट्स और केक एटसेट्रा. मिल्क, you can purchase milk and then you can further sell it, right? आप एक बड़ी होलसेल मार्केट हो, आपने दूध इकट्ठा खरीदा, उसे रिटेल मार्केट में जाके बेच दिया. That can also become intermediary goods. Or you sell milk to shake company, जो milk shakes बनाती है कंपनी, उनको बेच दिया. So your milk will become intermediate good. Okay, so the value of intermediary goods are added with the final goods. अलग से इसको नहीं हम वो करते हैं, काउंट करते हैं, ये final goods की वैल्यू में ऐड हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ मिलर बाइज व्हीट वर्थ ₹700. एक मिलर ने, आई एम जस्ट मेकिंग अ चार्ट ओवर हियर, मिलर ने क्या किया, ₹700 का व्हीट परचेज किया एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फ्लावर. इसको आटे में बदल दिया. Now he will sell this for ₹1000. So this 700 is already included in 1000. Additional ₹300 is also added. ठीक है, point clear? Alright, so that is the concept of intermediary goods. They remain within the production boundary. एक production unit से दूसरे production unit में इसको transfer कर दिया जाता है. Okay, point clear? And distinction between intermediary and final goods is made on the basis of end use of the product. Now let us understand the production boundary. देखो, दिस इज अ फैक्ट्री, ये पूरी एक फैक्ट्री है. फार्मर ए प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ ₹100, सेल्स इट टू बी. देन बी प्रोड्यूसेस थ्रेड आउट ऑफ द कॉटन, सेल्स इट टू सी फॉर ₹200, एंड सी फर्दर प्रोड्यूसेस क्लॉथ एंड सेल्स इट टू द कस्टमर फॉर ₹300. सो द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर. Okay, in this given diagram there are 3 production units A, B and C. Alright, so this is the production boundary. ये point आपको याद रखना है. So final goods are also classified into 2 categories. We have consumption good, we have capital good. Consumption good, it is to satisfy the consumer directly, like television, bread, butter, etc. Capital goods, they have derived demand. Derived demand means कुछ इसका फर्दर डिमांड होती है, यूज होता है, इस वजह से कैपिटल गुड्स को खरीदा जाता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी टू प्रोड्यूस समथिंग, सो दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस में आइडेंटिटी ये खो देता है, बट फर्नीचर की आइडेंटिटी नहीं जाती है. ठीक है, इट इज यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस. ऑलराइट, पॉइंट क्लियर? So this was today's class. ये थी आपकी आज की क्लास, the lecture 1 on the हल्ला बोल series. We have covered 5 chapters today. Then we are going to cover 3 chapters in the next session. Next session में हम 3 chapters और cover करेंगे. I hope you enjoyed this हल्ला बोल series. Do let me know in the comment section if you enjoyed the series and we should continue it or not. क्या हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए? आर यू अप विद द नेक्स्ट लेक्चर और नॉट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट. अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम यहीं पर ही रोक देंगे सेशन को, बट इफ यू एंजॉयड इट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट. ऑन दिस नो पॉजिटिव नोट वी आर एंडिंग द सीरीज. थैंक यू एवरीवन.